है, उसकी मीटिंग जब 21 तारीख को रखी जाती है तो ये नवाबजादे वहां पहुंचते नहीं, कहते हैं मैं और राजनीतिक गतिविधियों में राजस्थान में उपस्थित हूं, तो आप इसको बढ़ाइए। उसकी तारीख 23 की जाती है, 23 को भी ये वहां पर नहीं पहुंचते, फिर उसको बढ़ाकर 26 या 30 की जाती है और उसमें कहा जाता है कि मेरे जगह पर, मेरे बिहाफ पर आतिशी मरलेना इसको अटेंड करेंगी। आतिशी मरलेना जो दूसरी मंत्री हैं वो भी नहीं पहुंचती 30 तारीख को, और उस तारीख को बढ़ाकर 6 तारीख को कर दिया जाता है, जब दिल्ली के अंदर कम पानी छोड़ने पर बाढ़ आ जाती है। 2 साल से दिल्ली फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की मीटिंग ही नहीं हुई, और जब 3 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया, दिल्ली में बाढ़ आ गई, 8-8 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़ा गया, तब बाढ़ नहीं आई। ये बात मैंने इसलिए शुरू की कि आज जब यहां बैठे हुए लोग जिक्र करते हैं दिल्ली का, तो वो भूल जाते हैं कि दिल्ली राज्य नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा 1/4 मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले तो आधी ताकत कोर्ट ने ही मान लिया कि लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ऑल दीज इश्यूज विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ले दे के एक विषय बचा था जिसके ऊपर सारा झगड़ा है, सारा मामला फंसा सर्विसेज के ऊपर। और जब सर्विसेज की बात आई तो सर्विसेज क्यों आवश्यक हुई? मेरे से पूर्व में बोलने वाले मेरे अन्य दल के मित्रों ने कहा कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। अब अगर हम सब मानते हैं कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने निर्णय में तय किया है कि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी का अधिकार रखती है, वो स्टेट नहीं है। और यूनियन टेरिटरी चाहे दिल्ली हो या पौंडीचेरी हो, सेंटर का उसमें अधिकार है। और जब विल ऑफ द पीपल की बात आती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बड़ा तो विल ऑफ द पीपल कोई और रिप्रेजेंट नहीं करता। प्रधानमंत्री से बड़ी विल तो एक शहर का मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट नहीं करता, जहां पर 7 सांसदों को चुनकर भी इसी दिल्ली की जनता ने भेजा है। तो जब ऐसी ऐसी मुश्किलें आती हैं दिल्ली में, मैं कोविड याद दिलाना चाहती हूं या बैठे हुए सब लोगों को, पूरे देश की रिक्वायरमेंट कोविड से पहले ऑक्सीजन की 972 मेट्रिक टन थी, पूरे देश की, जो लिक्विड ऑक्सीजन की, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए होती थी, एलएमओ की। कोविड आया, भाई साहब ने एक तो अस्पताल नहीं बनाया, किसी की कोई मदद नहीं की, भोजन की व्यवस्था नहीं की, कोई काम नहीं किया। और ले देकर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल सिटी है, पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की निगाह यहां लगी रहती है, तो केंद्र सरकार को कूदना ही पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई सांसद काम नहीं करेंगे? सांसद बेचारे इंटरवीन नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की जाती है तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई 972 मेट्रिक टन दिल्ली के लिए बहुत अधिक है, हम इतनी सिर्फ दिल्ली को नहीं दे सकते, पूर्वोत्तर के राज्यों से जहां पर आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से ऑक्सीजन को काट करके लाना दिल्ली। और आप अंदाजा लगाइए कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। क्रायोजेनिक टैंकर्स, हवाई जहाज, ट्रेन, सब कुछ लगाकर ऑक्सीजन लेकर आए और लाकर दिल्ली के बॉर्डर पे ऑक्सीजन खड़ी कर दी। बोला जी बताइए कहां भेजनी है, तो उसकी अव्यवस्था थी, इनको पता नहीं था कहां भेजनी है। और जो प्राइवेट अस्पतालों की अपनी व्यवस्था थी ऑक्सीजन लाने की, खरीदने की, उसको तहस नहस करके इन्होंने सरकारी अस्पतालों में वहां पर भेज दिया जहां पर कोई व्यवस्था खड़ी नहीं की थी। दिल्ली के अंदर जब मेडिकल चीजों की व्यवस्था की बात आती है तो एम्स केंद्र सरकार चलाती है, सफदरजंग केंद्र सरकार चलाती है, लेडी हार्डिंग, लेडी इरविन सब केंद्र सरकार चलाती है। कई लाख करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार करती है, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय करता है। जब इनको कहा गया G20 है, सड़कें ठीक कर लो, तो कहते हम पैसे नहीं देंगे। 700 करोड़ रुपया रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने दिल्ली को दिया है। तो अब आप पूछते हैं कि दिल्ली के अंदर केंद्र का हस्तक्षेप कैसे? दिल्ली के अंदर केंद्र के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली चल ही नहीं सकती, क्योंकि शीश महल में रहने वाले नवाबजादे ने 13,500 करोड़ रुपया सिर्फ होर्डिंग पोस्टर के ऊपर खर्च करना तय किया है। और इसलिए यह बिल लाना पड़ा, और यह बिल लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली की जनता जवाब हमसे मांगती है।
आप जैसों के घर में जब पानी भर जाता है तो आप भी एनडीएमसी को फोन लगाते हैं, दिल्ली सरकार को फोन नहीं लगाते। 70,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड में होता है तो उसकी जवाबदेही किसी की नहीं होगी। इस एक्ट के, इस बिल के मूल में जो भावना है वो भावना यही है कि एक व्यक्ति, सबने जिम्मेवारियों की और तमाम चीजों की बात की, एक व्यक्ति नवाबजादा बन गया है आम आदमी कहते कहते, और वो भूल गया है कि चुने हुए नेता चाहे कॉरपोरेटर हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली से एमएलए हो, चाहे एमपीज हो, सबकी जवाबदेही अपने लोकतंत्र में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति है। और यहां पर अपनी सब चीजों से हाथ जोड़कर कह देना कि भैया केंद्र की सरकार काम नहीं करने देना चाहती, हम तो करना चाहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं, जैसे इससे पहले मेरे कई मित्रों ने कई सारे उदाहरण दिए हैं, मैं उन उदाहरणों पर नहीं जाऊंगी, पर एक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इनके पास 400 करोड़ रुपया नहीं है, तो कौन काम नहीं करने दे रहा। एक तरफ कहते हैं हमने इतने स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, केंद्र सरकार के खड़े हुए कॉलेजेस और स्कूल्स वो केंद्र सरकार ने बना के दिए। 300 500 करोड़ केंद्र सरकार ने लगाया, जाके अपनी फट्टी टांग के आ जाते हैं। तो अब ये सब अगर केंद्र सरकार करेगी तो काम करवाने का अधिकार भी उसके पास है। और इसके मूल में असली कहानी शीश महल की कहानी है। असली कहानी विजिलेंस और नॉन विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स की कहानी है। असली कहानी है कि बिना, आप बताइए, मुझे नहीं मालूम, सबको बहुत एक्सपीरियंस है, वैसे राज्य सरकारें चलाई हैं, और जब ये लोग मोरालिटी की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 90 बार 356 को इस्तेमाल करके चुनी हुई राज्य सरकारों को जिन लोगों ने डिसमिस किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात ना करें तो बेहतर है। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। नहीं, अरे मजाक की बात है, मजाक की बात। एक मिनट, सर, मैं जो कहना चाहती हूँ, टूल्स ऑफ गवर्नेंस की यहाँ पर लोग वायलेट कर करके देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ईडी काम नहीं करेगा। आप देश की जनता को चूना लगाते रहेंगे और सीबीआई काम नहीं करेगी। आप गुंडागर्दी करते रहेंगे, दिल्ली के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आता है तो राइट्स करेंगे और पुलिस काम नहीं करेगी। क्या ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं? अल्टीमेटली ये सब टूल्स ऑफ गवर्नेंस हैं, और टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस अगर इस्तेमाल नहीं होते इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि ये टूल्स आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। और आज जब दिल्ली की बात आती है, जब इस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट की बात आती है, तो मैं इस इनैक्टमेंट में एक चीज याद दिलाना चाह रही हूं, क्योंकि मैंने कहानी शुरू की थी शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की। तो शीश महल में रहने वाले नवाबजादे कहा कि 370 पेज मेरे पास हैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो वो 370 पेज तो खो गए। उन 370 पेज का तो हिसाब किताब कहीं आया नहीं। और आज विडंबना देखिए, उन्हीं के हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं, उन्हीं के साथ अलायंस की जा रही है, उन्हीं के साथ गठबंधन किया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचार को कैसे रोकने की बजाय कैसे बढ़ावा मिलता रहे। और कानूनी व्यवस्था, और जैसे मैंने पहले कहा कि कोई बीमारी होती है तो थोड़ा लाचार कर देती है, पर लाइलाज तो नहीं होती। इसी तरीके से संविधान के अंदर लाइलाज कुछ भी नहीं है। अगर बीमारी पैदा होगी तो उसका इलाज भी होगा। और खास तौर पे दिल्ली के अंदर जिन्होंने डेंगू की बीमारी फैलाने का काम किया, कोरोना की बीमारी फैलाने का काम किया, काम नहीं करने का काम किया, इलाज तो होगा ना उसका भी। और ये उसी का इलाज है। आप अंदाजा लगाइए, मैं बाढ़ की बात बार बार लेके आ रही हूं, बाढ़ की बात में 6,500 करोड़ रुपया फ्लड डिपार्टमेंट का खर्च हो जाता है। 250-260 लोग उसमें काम करते हैं। और जब बात की जाती है तो हरियाणा ने नहीं किया, उसके बीच पंजाब आता नहीं, हिमाचल ने काम नहीं किया, बाकी सबने काम नहीं किया। ये बहुत खास है, इन्होंने काम किया। और फाइनली जब उसमें मिलिट्री को इंगेज करना पड़ता है,
आर्मी को लाना पड़ता है, आर्मी के गोताखोर लगते हैं, तो लास्ट लाइन पहले होता है 20 घंटे लगातार काम करने के बाद में आज वो बराज के गेट खुले और वो बराज के गेटों से सक्शन पंप लगा के, कंप्रेसर लगा के हमने सिल्ट को हटाया। तो भाई सिल्ट कलेक्ट कैसे हुई जब 6,500 खर्च हो गया, ये तो समझा दो। और मिलिट्री के गोताखारों को बाद में धन्यवाद। आप 20 घंटे ऐसे पढ़ के लगता है कि जैसे 20 घंटे यही गोता लगा रहे थे पानी में। तो यही कारण है कि इस एक्ट को लाना पड़ा। और सर्विसेज में जब लेके आए तो सर्विसेज में लाने के पीछे, हाँ मैं इससे पहले अपने मेरे कुछ मित्रों ने कहा है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूं। इन्होंने कहा कि ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, मिलिशियस लेजिस्लेशन है। तो जिन्होंने ये दो शब्द यूज किए हैं, टारगेटेड और मिलिशियस, मैं उनको बताना चाहती हूं कि ये पर्पसफुल लेजिस्लेशन है। और वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है लेजिस्लेशन को बनाते हुए कि फॉर अचीविंग द पर्पस। एंड व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस between domestic politics or domestic needs and national needs, because Delhi is a capital city where balance needs to be kept between the local as well as national and international requirements, because we are a capital city. So it is a purposeful legislation to achieve the balance between two methods of governance. The second aspect has been that throughout there have been misstatements by lawyers, by practicing lawyers, by repeatedly saying that India is a federal structure, federal structure, federal structure. Either they have not read or they are misleading. I will go by the second, that they are misleading, misstating and misquoting. India is a quasi-federal structure, which is what Constitution demarcates. India is not federal. The center will always have a primacy, otherwise to govern a complicated state as complicated as India is, as diverse as India is, will not be possible. That's why the Parliament of India, the central government of India has been given the primacy even in the Constitution, and this Parliament has every business, every right to correct the wrong and bring the right law. The next thing, concept of states will be power and responsibility. I'm purposely addressing what the argument have come from the other side. So power and responsibility. I would say if a person, by whichever method, has come to power and becomes irresponsible, will the parliament, I'm so sure, will of the people, we have also seen ballots being rigged. So don't tell me whichever you don't understand. We also understand how panchayat elections have been conducted in West Bengal. So don't tell me all this. I think people of this country are mature enough. So when power vests with people who act irresponsibly, will this parliament not have the power to correct that wrong and tell people what their responsibility is, to make people answerable to the very people who have elected you? So the answer is power and responsibility. The balance needs to be struck, and that balance is what this legislation is seeking to address. Unaccountable, irresponsible. I mean, these are the words used. So I would go by that somehow the power structure in Delhi has been unaccountable and irresponsible by the manner in which the neutral bureaucracy has been dealt with. I do not know, I mean, I can only quote a great example of our own Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat, and we know how all kinds of cases, fake cases, etc. were made, and how those chief secretaries used to be appointed by the central government. Did they beat them up? Did they take them to a corner? Did they assault them? Answer is no. You don't do that. You battle it out in the court of law. You battle it out by the method which is prescribed by law. But here the chief secretary, here the bureaucracy had been put under immense pressure to do the wrong. Arvind Kumar, a person, a bureaucrat working with the office of Deputy CM,
is a witness in the case of शराब घोटाला। शराब घोटाले में गवाही उसकी है कि किस तरीके से कोने में ले जाकर प्रेशर किया जाता था, गलत काम करवाए जाते थे। उसका क्या कोई इलाज नहीं निकलेगा कि आप गलत काम करवाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे? अभी पिनाकी जी ने पढ़ के बताया, जजमेंट में एक्साइटेड है। 400 से ऊपर लोगों को आपने बिना सर्विस कमीशन के, स्टेट सर्विस कमीशन होता है, सेंट्रल सर्विस कमीशन होता है, बिना सर्विस कमीशन के, बिना वैकेंसी निकाले, बिना कुछ किए अपने रिश्तेदारों को 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी दे दी। बाकी लोग क्या करेंगे जी? इस देश में इतने लोग बैठे हैं जिनको नौकरियां चाहिए, काम चाहिए। आप अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे? उसका इलाज है। और एक सवाल इन्होंने किया, 3 साल 10 साल, अरे एक्सटेंशन, क्योंकि वो आपके आदरणीय अध्यक्ष जी 370 पेज का नाम इन्होंने लिया था शीला जी के खिलाफ। जिस तरीके के घोटाले इन्होंने किए हैं वह 3-3, 5-5 हजार पेज हैं। वो 3-3, 5-5 हजार पेज के लिए उसको एक्सटेंशन देनी पड़ती है क्योंकि इतने मोटे मोटे घोटाले किए हैं। नाउ कमिंग टू द मीट ऑफ द मैटर, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, to conclude also. Please sir, I will. So the state's reorganization, which was brought in 1956, several changes have come, and finality is 2023, where Supreme Court gives control over services to Delhi government, and then ordinance was brought, and now people are saying, why was ordinance brought? Because act could have been brought, bill could have been brought. There was a gap of about 6-7 months, 5-3 months. So my point is, within less than 24 hours, when the Sheesh Mahal Ghotala was being investigated by the Vigilance Department, that not just that officer, 70-80 officers were transferred overnight. Now these are the officers which were investigating the scam. And because they were investigating the scam, overnight, they tried to circumvent the scheme of governance and transfer those officers. Thus, there was a need to bring in an ordinance. And after bringing an ordinance, the bill has been brought in. And this bill has been brought in to correct the status. So, the statutorily, so why was this brought in? This bill has been brought in to statutorily balance the interest of nation with the interest of Union Territory of Delhi in administration of the capital by giving purposeful meaning to the manifestation of democratic will of the people reposed both in the central government as well as GNCTD, that is National Capital Territory region of Delhi. So, by virtue of this, what has really happened is that a particular body, National Capital Civil Services Authority, has been established. And this National Capital Civil Services Authority will have 3 members. Chief Minister, who is not just the Chief Minister, but also the presiding officer of this committee, of this authority. Will have a member secretary, who's a member secretary of Home Secretary of the state of Union Territory of Delhi is going to be the member secretary. Then Chief Secretary of Delhi, because he's the principal officer dealing with administrative issues. What can it do? It can deal with transfers, postings of officials and disciplinary matters. Sole discretion on several matters, including those related to National Capital Civil Services, summoning, prorogation, dissolution of Delhi Legislative Assembly. This is all what has happened. Now, being the capital... Bill 2023. Let me make it clear at the outset that this bill is no ordinary piece of legislation. It represents a grave chapter in the history of the Indian Republic, seeking to ratify an ordinance that in many ways is an assault on our democratic heritage and the spirit of federalism. During the introduction of the bill itself, sir, I had filed a motion strongly opposing its very introduction in this House,
at a time when a motion of no confidence is pending for discussion. In fact, the Bhagavad Gita of Parliamentary Practice and Procedure, Call and Shaktar, page 772, explicitly states, when the leave of the House to the moving of a motion of no confidence has been granted, no substantive motion on policy matters is to be brought before the House by the government till the motion of no confidence is disposed of. Sir, in 27 no confidence motions brought since independence to this House, no bills were debated and passed before this government did so with 2 bills in 2018. Therefore, such an improper introduction of a substantive policy change while a no-confidence motion is pending is against democratic morality, to use a word much favoured by the Treasury benches. Let me remind my colleagues in this House that it was almost 4 years ago exactly when this government unceremoniously passed a bill that sealed the fate of a state government practically overnight, in the rampant disregard for the basic constitutional relationship of the people of Jammu and Kashmir to the Republic of India. Without consulting them or their elected representatives, this government showcased the same attitude that we are seeing today. A breathtaking betrayal of our democratic political traditions, culture, and utter contempt for the people of the state and of the value of the political representation that these citizens of India give themselves through elections. 4 years later, we're back in the House with a government that is clearly bringing the same attitude to our national capital. We saw when the Home Minister spoke. Sir, I'm sorry, I'm not yielding. I'm not yielding. Point of order में yielding की बात नहीं होती. Point of order is point of order. Please, this is my right. Listen. No. It is yield or not. This is my right. Yes, Ridiculous. Yes, it is right of the House. 52-1. जी. 52-1. अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में कहा सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का उसको रोज सुन रहा है और उसके बारे में इन्होंने बिना कुछ कहे हुए अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया. Sir, I am referring to something that happened in this House 4 years ago. Okay. It's a ridiculous point of order, sir. Now, the Home Minister, in introducing this bill, attempted to invoke Nehruji in his support. And I think that the expression that my friend Dayanidhi Maran was quoting in Tamil was that the devil can quote scripture for his own purposes. The truth is that times change, sir. Times change, and with that, facts change as well. There were no elected representatives for Delhi in an assembly in those days, sir. We were talking about a different Delhi and we were talking about a different India. Today, 75 years have happened since independence, 76. In any case, I have to say to my dear friends in the Treasury benches, you oppose everything Nehru said, you oppose everything Nehru stood for, so why not this one too? Oppose him saying that Delhi should be under the central government. That will be the end of the conversation. They also went on about alliance politics, but let me stress, Mr. Chairman, this is not about alliance politics, this is about a principle. And the principle is that the Democratic and Federal Republic of India finds a grave shadow cast upon it today, sir. The Union of States, so original and aspirational in its genesis, faces a crisis of the federal division of powers. We saw the Minister of State for External Affairs choosing to intervene on internal affairs. Fine, that's your party's prerogative. But the fact is that she asserted that India is not federal. She said it 3 times. Why then do we have a state list, a concurrent list, a union list? Because we are federal. I'm sorry, ma'am, I'm not yielding. I'm sorry. I'm responding to a debate, to a point made in a debate. I have every right to do so, sir. Why does the government and the Prime Minister speak of cooperative federalism if she is right and we are not federal? Obviously, the government wants to sing the virtues of cooperative federalism, but in stark contrast to that, we see the ruling party impinging upon the sovereign domain of the states, from vacillating on GST dues and Manrega payments to states, to bulldozing through laws and subjects from the state list. A blatant subversion of the constitutional separation of powers is taking place again today through this bill. The difference is that this time around, the Honourable Supreme Court was loud, clear and unequivocal, and the government seems determined to ignore it. Let me set out before the House the 3 dangerous prongs of this amendment, sir. It removes services from the legislative competence of the Delhi Legislative Assembly. In other words, it amends the Constitution without being a Constituent Assembly, a constitutional amendment bill. Second, it establishes this National Capital Civil Services Authority, consisting, as everyone has pointed out, of the Chief Minister, Chief Secretary, Principal Home Secretary. Now, the authority in which the elected CM can be outvoted by the other 2
can even convene on the basis of quorum of 2. So even without the CM, the 2 officials can get together and decide anything they like, sir. They can make then recommendations to the Lieutenant Governor regarding transfers, postings, officials, disciplinary matters, and bureaucrats are going to henceforth exercise authority that voters have given to their elected public representatives. If BJP was in power in Delhi, sir, would they have accepted this? It seems the case of where you stand depends on where you sit. Now, third point, sir. The bill empowers the Lieutenant Governor to exercise his sole discretion on several matters, including those related to this civil services, the summoning, prorogation and dissolution of the Delhi Legislative Assembly. So this implies that the elected Chief Minister may even be unable to convene a session needed for essential government business. The LG can overrule him. Even a unanimous decision of this authority can be overruled by the LG. He can define the powers and duties of the officers of the Delhi government, superseding the ministers. Now, sir, executive lawmaking through an ordinance, as the Supreme Court held in DC Wadhwa 1987, is only to meet an extraordinary situation and cannot be perverted to serve political ends, quote unquote, from the Supreme Court. But the government's arguments, even today, were all political, sir. And what is interesting is it has intervened on political grounds in a brazen manner. Most crucially, they have added this subject of the exemption of services to the existing exemptions in the Constitution, land, public order and police, under Article 239AA, which everyone has been citing. To do it without amending the Constitution, which requires a two-thirds majority and a different process, is an act of constitutional subterfuge, sir. Now, how ironic that when the Supreme Court has said that there is a complete breakdown of constitutional machinery in Manipur, you don't want to discuss it. But when you want to amend the constitutional machinery when it is functioning in working order in Delhi without admitting it. What kind of contradiction this is, sir? Now, is an ordinance or a bill even constitutionally permissible when the very framework of the Constitution's basic structure is being altered? Article 239AA provides the Delhi Legislative Assembly with powers to make laws on subjects in the state list and the concurrent list, barring police, public order and land. Agreed. Parliament, of course, they are right, can legislate on subjects under the state list with respect to Delhi, but the bill specifies that the Delhi Legislative Assembly will not have the power to legislate on the subject of services, which actually comes under the state list. So by doing so, the bill effectively expands the subjects that the Delhi Assembly cannot legislate on, and therefore is changing the constitutional framework. Under Article 368 of the Constitution, a constitutional amendment has to be initiated for such an action. So I ask you, Mr. Chairman, sir, how can you admit this bill except under the rubric of a constitutional amendment bill? It just seems to me, sir, this is completely out of order in terms of the procedures of this House. Now, let me take you back to what the Court has said in its judgment of May 2023. The Supreme Court has argued that democratic government rests on a triple chain of accountability. Civil servants are accountable to ministers, ministers are accountable to legislators, and legislators are accountable to the electorate. That is how we all function, sir. That's our democracy. If a democratically elected government is not provided with the power to control the officers posted within its own domain, then this key principle of the triple chain of collective responsibility becomes redundant, sir. By severing the first link of the triple chain of accountability, the bill is essentially contradicting the principles of parliamentary democracy. In the very year that the Prime Minister has hailed us as the mother of all democracy. Can a mother treat her children this way, sir? Now, I do want to say, sir, Article 239AA, which... Huh? Stepmother. Well, even stepmothers would not do this, I assure you. Conferred a special status on the National Capital Territory, constitutionally entrenched a representative form of government, and incorporated a spirit of federalism so that the residents of the capital of India have a say in how they are governed, sir. It is the responsibility of the government of the NCTD to give expression to the will of the people of Delhi who elected them, sir. Now, the Supreme Court has said that Delhi has a sui generis status. They keep saying it's not a full state, but it has a special status. The court noted that the principles of federalism and democracy are interlinked, since the state's exercise of legislative power gives effect to people's aspirations, and that federalism, I'm quoting the Supreme Court, creates dual manifestations of public will in which the priorities of the two sets of governments
are not just bound to be different, but are intended to be different, quote unquote. So what are they talking about, sir, on the Treasury benches? Now, the Supreme Court's May judgment reiterates the principle spelt out by its 2018 judgment that ministers bear responsibility before the legislature for every action undertaken by public officials in their respective department. The court has observed a paramount feature of the federal constitution is this distribution of powers in such a way that the ministers exercise their exclusive power over administration. Now, how can you then say that a minister is responsible for an official who in fact can supersede him on the provisions of this bill? If you are a minister, Mr. Chairman, sir, and your official is taking a decision you don't approve of, how are you accountable? What happened to the core principle of parliamentary democracy, sir? And you cannot hold your officials accountable even for bureaucratic delays. They are larger than you, sir. As Supriya Sule said, the selected are overtaking the elected. Now, the Lieutenant Governor under Article 239AA has to act on the aid and advice of the Council of Ministers, except when exercising discretionary powers. Now, the Transaction of Business Rules of the Government of NCT Delhi, 1993, provides that certain matters must be submitted to the LG through the Chief Minister and Chief Secretary for his opinion prior to the issue of any order. And these are spelt out, sir. Peace and tranquility of Delhi, relations of the Delhi government with other state governments, relations of the Delhi government with the Supreme Court, the High Court of Delhi, and summoning, proroguing and dissolving of the Legislative Assembly. The bill expands those mentioned matters now to include the relations of the Delhi government with the central government. Additionally, it expands the powers of the Lieutenant Governor's opinion to have sole discretionary power on these matters. If there is any difference of opinion, even on matters beyond these three items, between the LG and the CM, the LG takes precedence. Now, this is the point that my respected colleague from the DMK was making, sir. Already in a time when there is a lot of controversy about the powers being exercised by governors in many states, we are now giving the Lieutenant Governor of Delhi an unprecedented degree of power over the elected representatives of the people who are supposed to implement the wishes of the public according even to the Supreme Court, sir. I'll conclude in 2 minutes, sir. The basic point is, you all know, Lieutenant Governors and Governors are supposed to act on the aid and advice of the Council of Ministers on matters within their executive competence. So you're contradicting the 2018 judgment of the Supreme Court, which stated that the decision-making power lies with the elected government. How can this pass the filter of this hallowed house, sir? What we have repeatedly seen under this government is a brazen effort to curtail the autonomy of states. The PM talks about cooperative federalism, but we are witnessing instead coercive federalism, sir, that seeks to centralize all power in the hands of the central government. And the problem is, it looks as if in the new India, some states will come first if they are ruled by the right party. Others must remain subservient to the political wishes of those in Delhi. I want to conclude, sir, with just two more thoughts. The first is, there are multiple aspects to this bill. There's been not to the bill specifically, but to what the bill represents. The cultural aspect of assaults on states' rights by the unjustified push towards imposing Hindi on the southern states. There's a law and enforcement angle through the weaponization of independent regulatory and investigative bodies like the ED, the CBI, the IT department. There's also definitely the use of legislation like the Disaster Management Act. We saw an obscure provision of which was used to ride roughshod over states' rights in imposing successive lockdowns during COVID without consulting states. We've seen, sir, in the creation and misuse of the PM Cares Fund, which limited the flow of cash to the state-run Chief Minister's disaster relief funds. We've seen this with the acceleration of centrally sponsored schemes, which now seeks conclude. Sir, I'm just illustrating the problem of states' rights and federalism, sir. So I do want to say, and finally the large number of cesses that are currently being levied by the central government, the proceeds of which are not being shared with states, sir. So I'm sorry to say, is this a new definition of na khaunga, na khane dunga? I'm very, very concerned, sir, that this legislation is putting uniformity and central control over the democratic interests of our country that the Prime Minister hails. And I do want to stress, fundamentally, this is a basic constitutional question. The highest court of the land has ruled in favour of both the spirit and the letter of the Constitution. Sir, we
owe ourselves more respect. So Speaker साहब बोलते हैं कि इस सभा की गरिमा को respect करो, sir. We should definitely treat this House with more dignity than to let such a travesty of a bill pass this House. Thank you, sir, and Jai Hind. जी मसूदी साहब प्लीज। चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया मुझे इस बिल पर बोलने की इजाज़त देने के लिए। जनाब मैं द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 की मुखारबत में खड़ा हूँ। जनाब दरअसल ये एक हमला है आइन पर और आइन के जो फंडामेंटल जो बुनियादी आइन की जो रूह है उस पर ये हमला है। तो जनाब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, यहाँ ये कहा गया कि फेडरलिज्म, इंडिया एक फेडरल स्टेट नहीं है और ये फेडरलिज्म इसका हिस्सा नहीं, इसके आइन का। जनाब केशवरंत भारती केस में स्पष्ट किया, साफ किया सुप्रीम कोर्ट ने कि फेडरलिज्म एक बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो इसको पामाल किए जाने की कोई इजाज़त नहीं है। तो जनाब दरअसल बात क्या है, मामला ये है कि ये लोकशाही और अफसरशाही के दरमियान एक मामला है। ये प्रयास किया जा रहा है कि अफसरशाही हो और लोकशाही नहीं हो। देखिए जनाब आइन के तहत जो जब हमने अपने खुद को एक आइन दिया, वी द पीपल, हम अपने आप को आइन दिया, तो हमने एक नजरिया दिया कि ये कई मैप आउट किया और ये कहा कि कैसे चलेगा हमारा मुल्क, कैसे चलेगा। उसमें रियासतों को हुकूक दिए गए और मरकज को हुकूक दिए गए, लेकिन ये इजाज़त नहीं दी और उनका ये बाज़ाब्ता डिमार्केट किया गया कि उनके स्फीयर ऑफ एक्टिविटी क्या होगी, क्या अपना अपना स्फीयर होगा। लेकिन ये जो बिल है, इस बिल से कोशिश ये की जा रही है कि जो हुकूक हैं, जो भी इख्तियारात हैं दिल्ली के, वो खुद ले जाए। जब यहाँ बार बार जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ और होना भी चाहिए था, क्योंकि ये मामूल बन गया इस सरकार का कि आक्रमण करने का आइन पर, और ये आक्रमण हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब एक स्टेट के 2 हिस्से किए गए और दफा 370 और 35A को पामाल किया गया और आइन रोंद कर वो सारे फैसले किए गए। तो जनाब आप 356 का सहारा लेकर जो किसी भी जगह एक लेबॉर्ट्री बनाया गया जम्मू कश्मीर को, ये जो लेबॉर्ट्री बन गई और तजुर्बा किया गया वो किसी भी सूबे के साथ, किसी भी स्टेट के साथ किया जा सकता है। 356 का सहारा लेकर एक स्टेट के 2 हिस्से किए गए और सबस्टेंटिव चेंजेस किए गए 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की गई, जबकि 356 एक इमरजेंसी प्रोविजन है और वो रेस्टोरेटिव है, वो सिर्फ जमहूरियत बहाल करने का एक प्रयास है, एक मामला है। तो जनाब क्या नहीं, और आजकल क्या किया जा रहा है, 1.5 करोड़ लोगों को जनाब कोई असेंबली नहीं है 9 साल से, कोई हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं, वहीं पर आओ ना, क्योंकि ये उसके साथ मुंसलिक है ना। तो कोई हुकूमत नहीं है और नहीं असेंबली का इंतखाब करने के लिए, मुंतखब करने के लिए इनके पास कोई हिम्मत है। तो जनाब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है नॉर्मलसी का। जनाब आज जम्मू कश्मीर में छोटे जो ताजर हैं, छोटे जो व्यापारी हैं, उनकी जायदादें जब्त कर रहा है। जब असली बिल पर आ रहा हूँ जनाब, कल यहाँ कहा गया कि 800 यूनिट बनाएंगे। आज ही मुझे कश्मीरी पंडित दोस्त ने फोन किया कि नहीं, मुलाजिमों को उनके जो वहाँ जहाँ पर उनको रखा गया जम्मू कश्मीर में काजीकोट वगैरह में, बिल पर मैं आऊँगा। तो जनाब ये भी उसी तसलसल में है जो वहां किया गया, ये भी उसी तसल्सल में, और यही बाकी स्टेटस में भी हो सकता है, क्योंकि इतना एक स्टेटमेंट है कि फेडरलिज्म है ही नहीं इंडिया में, ये फेडरल स्टेट है ही नहीं। अब जनाब इस बिल पर देखिए, सारा प्रयास है, सारा मकसद है केंद्रित करना जो भी पावर है, जो भी इख्तियार है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को, ताकि एक चुनी हुई सरकार जो है, उस चुनी हुई सरकार के जो हुकूक हैं, उसके जो इख्तियारात हैं, उनको बिल्कुल खत्म किया जाए और उनको बिल्कुल गैर मौसर बनाया जाए। अब जनाब अगर थोड़ा एक देखेंगे जनाब, इसमें प्रयास है, इसमें यह कहा गया है कि एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसमें केंद्रित होंगे, जिसमें मरकूज होंगे सारी पावर्स। अब जनाब उसके क्या इख्तियारात हैं, अगर वहां पर सर्वसम्मति भी हो, अभी कहा गया कि अगर ये होगा कि चीफ मिनिस्टर को वो रूल करेंगे 2 ब्यूरोक्रेट्स जो मरकज के बनाए हुए होंगे, तो ये कैसा सिस्टम है। लेकिन अगर वो सहमति भी हो, फिर भी आप देखिए, फिर भी जो रिकमेंडेशन अगर वो यूनानिमस भी हो, फिर भी इख्तियार है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दरकिनार करने का और वापस भेजने का। तो जनाब ये कैसा सिस्टम बनाया जाए, कैसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जबकि एक चुनी हुई सरकार जो है, चुनी हुई असेंबली है, उसके जो इख्तियारात है और उसका जो चुना हुआ वजीर आला है, उसको बिल्कुल डाउनग्रेड करके और उसके सारे इख्तियारात को बिल्कुल गैर मौसर करके एक इख्तियारात मरकूज किए जा रहे हैं जो नॉमी है। जैसे जम्मू कश्मीर के सिलसिले में जब सदर जमहूरियत ने खुद की कॉन्फ्रेंस खुद ली, क्योंकि वहाँ के गवर्नर जो थे उनके बनाए हुए थे
वो कैसे कंसल्टेशन और कंक्लूस हुई जो आइन का तकाजा था, वो दरकिनार किया गया। जनाब ये डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक तरफ जो दिशा में मुल्क जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है, कैसे शोबों को। और जम्मू कश्मीर के मामले में जनाब बाकी जगह जनाब तीन लिस्ट थे, कंकरेंट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो खुदमुख्तारी थी उसमें जनाब स्टेट लिस्ट था ही नहीं, क्योंकि जो हमने दिया था केंद्र को सिर्फ वही केंद्र के पास। बार-बार उधर चले जाते हैं। जनाब और कहाँ जाऊँ, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता हूँ, जम्मू कश्मीर के बगैर और कहाँ जाऊँ। तो जनाब बस ये कंक्लूड करूंगा। तो जनाब बात यह है कि जनाब ये भी उसी गैर, अब देखिए एक और बात है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की। जब अगर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सामने मामला है तो प्रॉपर्टी ये है, मॉरलिटी ये है, एथिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जाए, वो क्या कहेगा फिर किया जाए। हो नहीं रहा जिस तरह यहाँ अमेंडमेंट बिल हो रही है। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ये है कि हम टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, उनको अपना फैसला देने। जैसे ऑर्डिनेंस बिल की अमेंडमेंट लाई गई वो भी और उसको ऑपरेशनल किया गया। भाई ये जो मॉरलिटी है, जो एथिक्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, उसका पास प्लीज। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल को मुखालफत करता हूँ और ये मैं इस्दा करता हूँ इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल आइन के मुखालिफ है। जी श्री अब्दुल समद सामदानी जी, प्लीज। Thank you, sir. Sir, I oppose this bill. Sir, it is a very critical legislation that is definitely going to upset and disrupt the delicate balance between the center and the states. Sir, it is against the very basic constitutional dictum that India shall be a union of states. I am sorry to say that it is a move for greater centralization against Part 11th of the Constitution, which governs the relation between the center and the state. Sir, this is not well intended, it is ill motivated, and sir, the motivation behind this legislation is very ulterior. It is equal to nullifying the recent constitutional bench verdict, which says, sir, I quote, the subjects of services covered under 41 state list will fall under executive and legislative domains of the Delhi government, unquote. Sir, that is why the legislative quality and the competence of this bill is under question. Sir, we all know that it is against cooperative federalism. Nobody can justify. Whatever points may be brought by the learned members on the other side, you can't conceal the negative aspects of this bill, which goes against the very spirit of cooperative federalism. Sir, it is highly condemnable that potentially divisive issues are brought to focus. It is not for the good of the nation. Maybe it is done by the government in the run-up to the next year's election. But sir, it will not be for the good of the nation. Sir, another worst example for this kind of negative attitude is pitchforking and triggering the dormant and contentious debates around the Uniform Civil Code. That is also done in this juncture. Sir, India has remained uniquely unified despite infinite multiplicities of the country in various spheres of its life. So, sir, we have to protect the values and ethos of cooperative federalism. It is by protecting the diversity alone we will be able to protect the values of federalism. Sir, the diversity cannot be subsumed in an artificial uniformity. That is what we want from the government also. Sir, I can't understand why the government is rushing for and pushing for this kind of negative legislation, which are against the very norms of social, religious, linguistic, ethnic, and political diversity of the country.
it is going to surely affect badly our structures of fiscal federalism, linguistic federalism, cultural federalism, and also political federalism. As well as I add our service-oriented federalism, which this new legislation is definitely going to badly affect. So, sir, I have to say that it is an attempt to bolster center's hold on the capital's administration, an encroachment on the remit of the state government, and an expanding the ambit of the center. Sir, we can't understand. Instead of intervening in the matters of and setting right the burning matters in the states like Manipur and Haryana, why the government is bringing forth this kind of very negative legislations which are against the very spirit of Constitution? This bill under discussion is, sir, against Article 2(3)AA, and also it is against the recommendations of Sarkaria Commission, Venkatachalya Commission. Nobody can conceal this thing. Sir, the foundation of this enactment is very, very weak. As the poet said, sir, जो शाख नाजुक पे आशियान बनेगा वो नापायदार रहेगा. So, sir, the nest built on a very weak and tender branch of the tree, it will not last. And ये सारी कोशिश सर हो रहा है दिल्ली को जीतने के लिए. दिल्ली को सर हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है. दिल जीतने के लिए ये काफी नहीं होगा. इसी तरह के कानून से दिल को जीत नहीं सकते. दिल्ली को जीतने के लिए मोहब्बत, प्यार, रवादारी, भाईचारगी चाहिए. ये आपके पास नहीं है. और इसके लिए राजनीतिक शक्ति भी चाहिए जो गवर्नमेंट के साथ नहीं है. So, sir, I have to remind the government that the Supreme Court had held that the states are not mere appendages of the center. This is the decision and the declaration made the Supreme Court. And also I have to request the government to pay an urgent notice to Ambedkar's, sir, 1 minute. Ambedkar's December 1952 lecture on conditions precedent for the successful working of democracy. So, sir, what I feel is that this kind of negative legislations will affect the spirit of our federalism, our cooperative federalism, and I oppose this kind of an enactment, and I request the government to withdraw this kind of a legislation. Thank you, sir. Thank you. महोदय, मैं जब आज आ रहा था संसद में तो हमें एक दिल्ली के व्यक्ति मिले, बोले जरा जाके भैया बताना मुझे कि जो व्यक्ति लगातार सबको चोर कहता रहा आज उसी को सही ठहराने कैसे लोग बैठे हैं. मैं छोड़ देता हूं, लेकिन एक बात सदन को ध्यान रहे अध्यक्ष जी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे जो आज व्यक्ति बैठा है वो पहला मुख्यमंत्री नहीं है, वो 5वां मुख्यमंत्री है. इनके पहले शीला दीक्षित जी बैठी थी, उनके पहले सुषमा स्वराज जी बैठी थी, उनके पहले साहिब सिंह वर्मा जी बैठे थे और पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे. कभी भी इस तरह का संकट दिल्ली में नहीं आया था जो आज आया है. अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक सदस्य लोक लाज की बात कर रहे थे. बिहार के नेता हैं. बिहार के नेता के मुंह से लोक लाज सुन के हमको हमारे भोजपुरी का एक कहावत याद आ रहा था कि सुपवा बोले तो बोले चलनियों बोलत अटे, जना में 72 छेद बाटे. फिर भी सभापति महोदय, हम भी चुन के आए हैं. हमारे साथियों ने कई बार कहा वो चुन के आए हैं, चुन के आए हैं, चुन के आए हैं. हम भी चुन के आए हैं, 2-2 बार चुन के आए हैं. और यही नहीं, हम निगम में भी चुन के आए हैं. और ये सभी चुन के आए हैं जो ये कानून बनाने वाले लोग हैं. लेकिन पता नहीं क्यों उनको अपने ही कानून बनाने की क्षमता, योग्यता पर संदेह हो गया है. कोई बात नहीं, डिसाइड करेगी देश की जनता. जब कोविड आया था तो याद करिए क्या हुआ था. देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सड़कों पे थे. जब कोविड आया तो ये अस्पताल दिल्ली का दौरा कर रहे थे और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री थे वो कहीं अंदर बैठ करके पता नहीं कौन सी मच्छरदानी ओढ़ के बैठे हुए थे. जब हमारे दिल्ली में बाढ़ आया
तो अमित शाह जी की व्यवस्था संभाल रही थी, और ये व्यक्ति के घर में जब पानी घुसने लगा तब जाके, जैसे कभी कभी वो बिल में पानी जाता है तो कुछ जानवर निकल के आ जाते हैं, उस तरह से ऐसा देखा हमने और दिल्ली बर्बाद हो गई। मैं आज आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सभापति महोदय, तब या तो दिल्ली के मुख्यमंत्री शीश महल में सो रहे होते हैं या तो शराब घोटाले की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से आपके सामने अब बताना चाहता हूं कि इस डिबेट से वो व्यक्ति बहुत खुश होगा, क्योंकि उसको तो अब कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि जो कोविड में किराएदारों से वादा किया था कि किराएदार लोग भागना मत, तुम्हारा किराया दिल्ली सरकार देगी, लेकिन आज तक किराएदारों को यह सुविधा नहीं मिली। यहाँ के लोग पूछ रहे हैं, हमारे साथियों ने भी कहा, यमुना गंदी कैसे हो गई, डीटीसी घोटाला कैसे हो गया, यहाँ पीएम आवास योजना क्यों नहीं चालू है, यहाँ पे आयुष्मान योजना क्यों दिल्ली में बंद हो गई, यहाँ बुजुर्गों का पेंशन क्यों बंद है, यहाँ जल बोर्ड घोटाला क्यों हो गया, यहाँ गरीबों का राशन कार्ड क्यों नहीं 9 साल से बन रहा है। सभापति महोदय, आप वहां बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, जहां गरीबों के लिए अनाज कितनी भारी मात्रा में दे रहे हैं। दिल्ली के गलियों में जाइएगा तो अनाज के लिए राशन कार्ड नहीं बनने के कारण लोग रो रहे हैं। और आज जब मैं बात कर रहा हूं, कल शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री को पब्लिक ने पकड़ लिया। पब्लिक ने पकड़कर, पुलिस नहीं होती तो पता नहीं उनका क्या हाल होता। हम चाहते हैं नेताओं पे हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन आज दिल्ली इस प्रकार से रो रही है। एक नया कॉलेज नहीं 10 साल में, एक नया स्कूल नहीं। ये सवाल अब पूछे तो कौन पूछे। झुग्गी वासियों को घर देने का वादा था दिल्ली मुख्यमंत्री का, देना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री जी को। अभी 3025 लोगों को दिया। कई हमारे साथियों ने पूछा अध्यादेश क्यों आया। आप याद करिए, 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो दूसरे दिन जिस व्यक्ति के ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, जो व्यक्ति फोन पे कहा है कि ये व्यक्ति मेरा खास है, इसको 100 करोड़ रुपया दे देना, वो जो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं। आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की अभी स्पष्टता भी नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, जैसा हमारे कई साथियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि अस्पष्टता को बनाए रखने के लिए यह सदन कानून बना सकता है। उसके बाद भी बिना उस पैरा को पढ़े हुए, पैरा 95 को, इन्होंने तुरंत सवेरे किस अधिकारी का ट्रांसफर किया, जो विजिलेंस ऑफिसर था। मेरे विद्वान साथियों, आप भी सोचो, आप किसका समर्थन कर रहे हैं। मैं तो गृह मंत्री जी से कहूंगा कि मुझे कई एंगल से ये शंका हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। सभापति महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, आपको मैं बताता हूं क्यों। अभी जब यमुना जी में बाढ़ आया, अभी जब मैं यमुना जी में बाढ़ में गया तो मैं मुख्यमंत्री का एक बयान सुनता हूं, कई लोगों के कागज बह गए हैं, उनके कागज फिर से बनाए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, किसके कागज बहे। हम तो जिनके जिनके लिए खाना लेकर के गए, जिनके जिनके लिए हम रोटी लेकर के गए, जिनके लिए हम नाव लेकर के गए, वो तो अपना सारा सामान लेकर के सड़क पे सिर्फ टेंट का इंतजार कर रहे थे। कागज किसका बनाने की बात कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। क्योंकि मुझे बिहार की महिलाओं ने कहा, मैं आपको वीडियो दे सकता हूं, उनका बयान दे सकता हूं। बिहार की, यूपी की महिलाएं कह रही हैं, हमें तो ये मुआवजा भी देने को तैयार नहीं है। मेरे सभी साथियों, आप विचार करिएगा। और मैं ये बात बताते हुए, हमारे नेता विपक्ष कह रहे थे कि ये किस कारण से ये बिल आ रहा है। सुप्रिया सुले जी यहां बैठी थी, अभी है नहीं, उन्होंने मिस कोट किया सदन को। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्ण राज्य पे हम हमेशा मैनिफेस्टो में देते हैं। मैं तो दिल्ली में 2013 से हूं, न 2013 के चुनाव में, न 2014, न 2015, न 2017, न 19, न 20, कभी भी हमने मैनिफेस्टो में नहीं दिया। आप इतने बड़े सदन को गुमराह न करें। और जहां तक एलजी की बात है, एलजी वही टोकते हैं जहां संविधान का हनन होता है। सभापति महोदय, मैं G20 होने वाली है दिल्ली में। अभी एक दिन मैं अपने घर में रात के 12:30 बजे सोने की तैयारी कर रहा था, तभी पता चला एलजी महोदय बाहर सड़कों पे पेड़ पौधों की वो सुंदरता देखने आए हैं। मैं हैरान था। मैं घर से बाहर निकला और
उस समय दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने शीश महल में सोए हुए हैं, तब मुझे ये कहना पड़ता है कि सभापति महोदय, ये जो बिल है ये दिल्ली के खुशियों का बिल है। इस बिल को मैं तो प्रार्थना करूंगा आप बहस करिए, बहस करना ही चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी साथी बोल रहे हैं, कई दिनों के बाद बोलने का मौका मिला है। लेकिन ये बिल दिल्ली के झुग्गी वासियों का, दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली की महिलाओं का, सबके अधिकार की रक्षा करने वाला है। इसको आप सब पास करें, यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री विनायक राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष के तरफ से मुझे मेरे विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और साथ साथ में ये जो बिल आया है, दिल्ली के बारे में जो बिल आया है, उसको स्ट्रांगली अपोज कर रहा हूं। सभापति महोदय, वैसा देखा जाए तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने विवेचन जो किया, उसमें इस बिल हम क्यों ला रहे हैं इसका स्पष्टता तो की है। और उसी में इस बिल के पीछे जो कपट नीति है केंद्र सरकार की, वो सामने आ चुकी है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि 2015 के पहले सब अच्छा चल रहा था, लेकिन 2015 के बाद इस दिल्ली में जिस तरीके से मतदारों ने परिवर्तन निर्माण किया राजकीय क्षेत्र में, और इस परिवर्तन से वहां मतदारों के इच्छा से जो लोगों ने सरकार स्थापित किया, ऐसे आम आदमी के पार्टी के तरफ से जो एक कपट नीति निर्माण हुई, उसके लिए आज का बिल का जन्म हो चुका है। अध्यक्ष सभापति महोदय, वैसा देखा जाए तो दिल्ली ये लोकतंत्र की रक्षा करने वाला, ये लोकशाही का मंदिर में हम सब लोग बैठे, लेकिन दुर्भाग्य से यही लोकशाही के मंदिर में दिल्ली के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत इस बिल के माध्यम से हो रही है, ऐसा डर मुझे लगता है। क्योंकि एक दिल्ली में विधानसभा है, लोगों के माध्यम से पार्षद विधायक चुने जाते हैं, लोगों से माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद का निर्माण हो चुका है। पिछले जो पार्षदों का चुनाव हुआ कारपोरेशन का, इस चुनाव में सारे के सारे दिल्ली में उनका जो रवैया है दिल्ली वासियों का, वो स्पष्ट हो चुका। काफी प्रयासों के बाद में भी वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन न आने के जो एक दिल में उनकी जो ये थी बुरी भावना थी, वो उनके आज तक उनको सता रही थी, और देख रहे थे एक न एक दिन इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। दुर्भाग्य की बात ऐसे सभापति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश देने के बावजूद भी 19 मई को आदेश दिया, और दिल्ली में लोकतंत्र से निर्माण हुए राज्यकर्ताओं जो है, राज्य शासन की जो प्रक्रिया है, उन्हें पूरी तरीके से हक प्राप्त होना चाहिए, ये ऐसा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देने के बावजूद वही दिन में ऐसा ऑर्डिनेंस निकालकर लोकतंत्र की हत्या करना और प्रशासकीय अमल में लाना, ये निंदनीय भाव है। इसकी मैं तो निंदा करता हूं, लेकिन पूरे देश के लिए क्या बाबा साहब आम्बेडकर जी के कृपा से या उस वक्त के हमारे पूर्वजों के कृपा से ये जो लोकतंत्र की जो देन हमें मिली है, ऐसे लोकतंत्र का विसर्जन यमुना नदी में करने की शुरुआत इस राज्य के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है क्या? और सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के आज के जो राज्यकर्ता है, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल हो, कई कन्या हो, जैसे गृह मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा करके जब बंगलो बनाया, ऐसा उनके बयान में आया है कि एक ही अगर एक कारण है तो आपके पास पिछले कई दिनों से जेब में ईडी का एक राक्षस आप लेकर घूम रहे पूरे देश में, खास करके महाराष्ट्र हो या अन्य राज्यों में, बंगाल हो, आसाम हो, एक ईडी का जो है डायरेक्टर, उसका तो इस्तेमाल आप करते आ रहे। महाराष्ट्र की आज की स्थिति ऐसी है कि चाहे शिवसेना के गद्दार गठ हो
यार एनसीपी के गद्दार गट लो, उनके सारे बहुत बहुत